Hello everyone, I hope you all are doing well. So here is the most requested video which is on writing module. Also, as per all your requests, this video is going to be bilingual, which means I'll try to use Hindi and English to make your concepts clear. So first of all, writing task 1 for general training IELTS, the question will be to write a letter. So there are three types of letters: formal, semi-formal and informal. Formal letters are such as requesting information or applying for a job. Semi-formal letters are such as complaining to landlords or explaining to neighbor. And informal letters are like inviting a friend, thanking, apologizing, asking for advice. So सबसे important बात है how to start and close your letter. जैसे formal letters के लिए to start we write dear sir madam and close करने के लिए we have to write yours faithfully. Semi formal को शुरू करने के लिए we have to write dear Mr. या Mrs. वो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा और क्लोज करने के लिए yours sincere. Informal letters के लिए you can write any name. अगर क्वेश्चन में आपको कोई भी नेम दिया हुआ है then you have to write that name or else आप अपने कोई भी फ्रेंड का नेम लिख सकते हो. और क्लोज करने के लिए राइट बेस्ट रिगार्ड्स, वार्म विशेस, योर्स फ्रेंड. ऐसे आप करके अपना लेटर, इनफॉर्मल लेटर को आप क्लोज कर सकते हो. यूज कॉन्ट्रैक्शंस इन योर इनफॉर्मल लेटर्स. डोंट यूज कॉन्ट्रैक्शंस इन फॉर्मल लेटर्स. कॉन्ट्रैक्शंस आपको सिर्फ और सिर्फ इनफॉर्मल लेटर्स में ही यूज करने हैं. Avoid formal connecting words in informal letters like however, therefore. Instead of these words, you can use so, but, etc. Also make sure that you don't make any spelling mistakes. Divide the letter into paragraphs and also you can leave a line between the paragraphs. So there are going to be 3 paragraphs. पहले paragraph में आपको लिखना है introduction to the question plus problem या solution जो भी questions में पूछा होगा. Second paragraph में solution plus action and third paragraph में conclusion. Try to use clear and legible writing because अगर आप clear नहीं लिखोगे examiner ज़्यादा time आपकी writing को नहीं लगाएगा समझने में. और अगर आपने सही भी लिखा होगा वो आपकी handwriting की वजह से नहीं पढ़ पाया तो उसे spelling mistake consider कर सकता है जिससे आपके scores कम हो सकते हैं. So make sure आप clear handwriting में लिखें. Include all the points which are given in the question, like explain the situation, describe why it bothers you, and suggest a solution. Make sure you use punctuation and capitalization where needed. You should do at least one writing task daily to improve your scores and make less mistakes. So बहुत बच्चे ये चीज पूछते हैं कि हमें letters लिखने के टाइम पे ideas नहीं आते, like we have problem to generate ideas. So सबसे important बात है if you are writing a letter, just stick to one idea. आप अपने लेटर में एक से अगर 2 या 3 आइडियाज लिखोगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे जिसका रिजल्ट आएगा आप you will be lack in ideas plus you will be lack and short of vocabulary और आपके पास ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस भी नहीं बनेंगे. So try to stick to one idea. आप उसको फॉलो करो, उसको एक्सप्लेन करो, उसको इलैबोरेट करो जिससे आपके पास वोकैबुलरी भी होगी, आपके पास आइडियाज भी होंगे और आपका लेटर एक फ्लो में होगा जिससे एग्जामिनर को समझ आएगा दैट यू आर क्लियर इन योर हेड दैट व्हाट आर यू गोइंग टू राइट एंड व्हाट आर यू राइटिंग. सो गाइज आई होप दैट दिस इंफॉर्मेशन इज बेनिफिशियल फॉर यू और आपको इस वीडियो से आपका राइटिंग टास्क 1 जनरल ट्रेनिंग आईएलटीएस के जो बच्चे हैं उनको समझ आया होगा. और अगर आपको कोई भी क्वेरीज है या कोई भी डाउट्स है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या मुझे डीएम कर सकते हैं aimforhigh.co.in पेज पर. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.